Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivardhari. Jaya Radha
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranchaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So in our previous session, we covered the discussion between Mahatma Vidur and Maitreya Rishi. And Mahatma Vidur, as we discussed in the previous session, that he has requested Maitreya Rishi to give him the knowledge of the science of Srimad Bhagavatam, which was spoken by Lord Krishna to Lord Brahma, and then the same was spoken by Lord Krishna to Sri Uddhav. And Maitreya Rishi also heard the science of Krishna consciousness. So Mahatma Vidur now wants to hear that science of Krishna consciousness from Maitreya Rishi, and he wants to specifically know about the Purusha avatars of the Lord, that how the Lord runs this whole material creation, and how this whole material creation is manifested by the Lord's potency, especially the Yog Maya potency of the Lord, which acts and through which this whole material manifestation takes place, and how the Lord descends himself as Karanodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Shirodakshai Vishnu. So these different aspects will be covered by Maitreya Rishi. So Maitreya Rishi, because Mahatma Vidur requested Maitreya Rishi to tell him about the science of Krishna consciousness and how the Lord descends, Maitreya Rishi, he has started to narrate to him about how it all happens. And we discussed that the Lord, he was present even because now Maitreya Rishi has started to speak the nectar of Chatushloki Bhagavatam, and he says that before everything, the Lord was there. When nothing existed at that time, Lord Krishna existed, and everything, or every whether it is material energy or spiritual energy, the Lord is the source of all the energies, and internal potency of the Lord or spiritual world is eternally existing, and this material world is temporarily existing. It's temporary. So this material world is temporary manifestation. Sometimes it is created, sometimes it is annihilated. That's what we discussed in the previous session. Now today we'll be starting with the 25th shloka of the
fifth chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam. So text 25, shloka number 25. Sava etasya samdrashtuhu shakti sadasadatmika maya nama mahabhaga yayedam nirmame vibhuhu. Sava etasya samdrashtuhu shakti sadasadatmika maya nama mahabhaga yayedam nirmame vibhuhu. Translation: the Lord is the seer, and the external energy which is seen works both as cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidur, this external energy is known as Maya or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. Now you see, what is Maitreya Rishi saying here? He's saying, Sa va etasya samdrashtuhu. Samdrashtuhu means one who has the vision or one who sees. So samdrashtuhu, it's the Lord who sees, who glances. He is the seer. And Shakti sada sadatmika. And this energy of the Lord, Shakti. Shakti means there are, as we know, there are two kinds of Shaktis, Yog Maya and Mahamaya. So Shakti Sad Asad Atmika. So this Shakti means, because here we are talking about external energy of the Lord. So this external energy of the Lord acts both as Sat and Asad Atmika. Sat Asad means it acts as the cause also and it acts as the effect also. That means everything is generated because of this energy, and the effect of this energy is also present in this energy only. Then Maya Nama Mahabhaga. And what is this energy of the Lord called? Here in the Shloka, it is mentioned by Maitreya Rishi that Maya Nama Mahabhaga. So this material energy of the Lord is called as Maya, right? Mayedam nirmame vibhuhu. And yaya idam, from this energy, nirmama vibhuhu. This whole material energy is, or this whole material world is created, or you can say is manifested by this energy of the Lord, which is called Maya energy. Okay. So this material energy is basically inert. It has energy, cannot function without energetic, right? Just like sunlight cannot exist without sun. So whenever there is energy, we know that there is a energetic, or there is a person or a source for that energy. And that source has to be a person, a personality. Whenever there is energy, there has to be an energetic from which that energy is emanating. And that energetic has to be a personality, right? So the Lord is the, although the energy or Maya energy of the Lord is very powerful, this Maya energy of the Lord is the cause of this material creation. But who is the cause of this material or Maya energy? That is the Lord. He is the source of this Maya energy also. So just like in this material body, the source of all energies in this material body is the soul.
as we have discussed in the Bhagavad Gita many times also, that the soul is seated within the heart in our body. And through this soul, which is seated in the heart of our body, all the energies are emanated, isn't it? All the energy which we have in our body is present, is emanating from the soul, which is present in the heart. Although the soul is present within the heart, but the energy of the soul or the effect of the soul is felt all over the body. Similarly, the Lord also, just like the soul is the controller or is the source of all energies in the body, as soon as the soul leaves the body becomes dysfunctional, body becomes inert. Similarly, this material world also is functional because the Lord has entered into this material world, right? And whenever the Lord wants, he can make it inactive also, right? And that's what Lord Krishna says in the Bhagavad Gita also, in the 9th chapter, the 10th shloka, that mayadhyakshena prakritihi suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya jagad viparivartate. That mayadhyakshena prakriti, Lord Krishna says that Arjun, this whole prakriti, this material energy is working under my direction. So just like this body is inactive, everything material is inactive, it is inert. Matter cannot move on its own, isn't it? A car will be lying in the showroom for millions of years until unless a driver sits in the car. The car can move only when driver sits in the car. Similarly, this body is moving because soul is sitting within the heart in the body. And similarly, this material energy is moving because Krishna has entered into this material energy or this material world as Vishnu. Maitreya Rishi now will be talking about that aspect of the Lord who enters into this material energy and runs this material creation. Now, text 26, shloka number 26. कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्. कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्. Translation: the supreme living being in his feature as the transcendental Purusha incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus by the influence of eternal time, the living entities appear. Now you see, what is Maitreya Rishi saying here? So he's saying, Kala Vritya tu Mayayam, Kala Vritya, Kala Vritti. So, by the influence or by the effect of time element, Mayayam, this material energy called Maya, Gunamayam Adhokshajaha. This material energy becomes active or becomes impregnated by Adhokshajaha, by Krishna. Adhokshaja is Krishna. The name of Krishna is Adhokshaja. And Adhokshaja Krishna, Purushena Atma Bhutena, he accepts Purusha avatar. Right? And he Purusha avatar means Vishnu. He accepts or he expands himself as Vishnu, as Purusha, and he enters into this material energy, Virya Madhatya Viryavan. And by his Virya, by his power, by his spiritual, by the potency of the Lord, Virya means potency of the Lord. So by the potency of the Lord, all these living entities enter into this material creation. So Krishna talks about this in the Bhagavad Gita also.
Krishna, he talks about it in the Bhagavad Gita also. He says that Tasmin Garbham Dadhamyaham. Let me take you to that shloka in the Bhagavad Gita where Lord Krishna talks about it. You can all see on your screen. In the 14th chapter of the Bhagavad Gita, you see what is Lord Krishna saying here. He says, Mama yonir mahad brahma tasmin garbham dadhamyaham sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. Exactly the same thing what we are discussing in the Bhagavatam, what Maitreya Rishi is saying, is mentioned here in the Bhagavad Gita also. So what is Krishna saying here in this shloka? The third shloka of the 14th chapter of Bhagavad Gita. So Krishna is telling Arjun that Arjun, Mama yonir mahad brahma. Mama yoni. Yoni means source. I am the source of this mahad brahma. Mahad brahma means, mahad means this mahat tattva. This material energy is called mahat tattva. So that is mentioned here as mahad. And brahma means same thing, material energy. Tasmin garbham dadhamyaham. And I impregnate. Garbh means to impregnate, to make pregnant. So I impregnate this material energy, Mahad Brahma. Mahad Brahma tasmin garbham dadhami. I give garbh, I impregnate this material energy. And then what happens? Because of my impregnation, because I inject living entities into this material energy, sambhava sarva bhutana tato bhavati bharata. Because I impregnate, I make this material energy pregnant, that's why this material energy develops sarva bhutanam, all the living entities enter. You see how beautifully the Lord describes about this material energy in the Bhagavad Gita. Same thing is mentioned here. You see, here little more detail is given because Bhagavad Gita is a nutshell and Bhagavatam is detailed study of the Bhagavad Gita. So you see here in detail, Maitreya Rishi is mentioning that Kala Vritya to Mayayam. So how it all happens? Krishna, how he impregnates this material energy is mentioned here. So the Lord, it is mentioned here that Kala Vritya, by the influence of time, so the Lord, you see, Guna Maya Madhokshajaha. So Guna and Kala. Guna means the three modes. So the Lord activates this material energy because material energy, when it is created, it is inert. It cannot move. So the Lord, to move this material energy, he influences this material energy with the three modes. Okay. And then he expands himself, or his expansion time factor activates this material energy. It is like stirring the material energy. So the three modes are there, and this material energy is put into motion by time factor, the time element, right? And by the combination of the three modes and the time element, this whole material energy gets activated. And then the living entities are born into this material energy or appear into this material energy. And who injects the living entities into this material energy? That is Krishna, right? So a very beautiful example we can understand by this example. Just like a mother. So mother's womb is the place where the body of the baby develops, right? Mother's womb is the place
Where all of us are born into this material nature. So how are we born? So mother's womb is the place where our body develops. But who injects us into the body of mother? The father. Mother's womb has all the ingredients which can develop our body, isn't it? Mother's womb has all the ingredients to develop our body. But until and unless the father injects the mother's womb with, with us, with living entity, until and unless the father injects the semina, and the semina of the father is actually the source of, I mean, we are present in the semina of the father, isn't it? So because the father has injected us into the womb of the mother, that's why the body develops. If father does not inject us into the womb of the mother, all the ingredients are there, but still mother's body remains inactive. But as soon as we enter into the body of mother, but we are injected by the father, right? So mother's body cannot produce the living entity, right? Mother's body cannot produce living entity. Mother's body can only, because mother's body has all the ingredients, right? All the material elements are present in the mother's body. But the body cannot develop unless and until the living entity is injected into the mother's body by the father. Similarly, this material nature has got all the ingredients to facilitate the bodies of living entities. 8,400,000 species can be facilitated by this material nature. Material nature is just like a womb of the mother. So it has got all the ingredients to facilitate our bodies. But material nature cannot on its own develop or produce living entities. The living entities are injected into this material nature by Krishna, the Supreme Lord. That's why Krishna is called, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Aham Bij Pradah Pita. Right? Krishna says, Aham Bij Pradah Pita. Want to see that shloka where Lord Krishna says this? You see on your screen. We discussed the 14th chapter, 3rd shloka. Just now we discussed. Mama yonir mahat brahma tasmin garbham dadhamyaham sambhava sarvabhutanam tato bhavati bharata. So Krishna says that Mama yonir mahat brahma tasmin garbham dadhamyaham, that I am the source of this material nature and I impregnate this material energy, and then sarvabhutanam, all the living entities, their body gets created, right? And then you see next shloka, what is Krishna saying? You see on your screen. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तियाः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता. You see, what is Krishna saying here? Sarva yonishu kaunteya. All the yonis. Yoni means species. So all the yonis, all the species of life forms. How many are there? 8,400,000, 84 lakh species. Murtaya, their body. Murtaya means their body, their forms. Sambhavantiya, their forms are created. Right? Tasam Brahma Mahad Yonir. Tasam Brahma Mahad Yonir. Their bodies are created by Brahma Mahad Yonir, this material energy. But
Aham bij pradah pita. You see the last word of this shloka, the last sentence of this shloka. Aham bij pradah pita. It is I who give bij. It is I who give the seed of living entities into this material nature. I am the seed giving father. You see? So Krishna is the seed giving father. So how does Lord Krishna impregnate this material nature? Like when we enter into the mother's womb, we take shelter of the semina of the father, and then we are injected into the mother's womb. But how the living entities are injected into this material world? So it is mentioned in the Vedic scripture that the Lord glances over this material energy. Just by his glance, he sees over this material energy, he glances, and through his glance, this material energy gets impregnated with living entities. Right? So that is what is mentioned in the Brahma Samhita, that Angani yasya sakalendriya vritti manti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadujvala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. So in the Bhagavad Gita, Lord Brahma says that Angani yasya sakalendriya. For Krishna, there is nothing called, he can, all his senses can act omnipotently. Omnipotently means all his senses have the potency of every sense organ. He can eat through his eyes, he can create through his, he can touch through his uh, tongue, he can eat through his eyes. So every sense is capable of doing every function. He is not limited like us, right? So living entities, they do not belong to this material nature. They enter into this material nature, their bodies are given by this material nature, and that is why bodies keep changing, because material nature is temporary and the bodies are produced by this material nature. But whom do the living entities belong to? They belong to Krishna, right? No living entity belongs to Krishna, not to this material nature. And that is why none of our material advancement can produce a living entity. We may become materially very advanced, but we can never produce a living entity by our material energy or material advancement, right? So living entities are basically, because they are injected by Krishna, they belong to Krishna. Okay. So they originally are actually not related to matter. They have no relationship with matter, the living entities. But because of their desire to go against Krishna, Krishna creates this material energy. And all the living entities who are against the will of the Lord, they are injected into this material energy by the Lord. But we belong to Krishna. We have no relationship with this material world. We have no relationship with matter. Right? So that is why living entities cannot remain happy in this material nature. That's why Krishna says in the Bhagavad Gita in the 9th chapter, that Dukkhalayam Ashashvatam. He calls this material energy as Dukkhalayam Ashashvatam. Mamupetti tu kaunteya Dukkhalayam Ashashvatam Napnuvanti Mahatmana Sansiddhim Paramam Gata. So he says this material energy or material nature is Dukkhalaya. Why? Why this is Dukkhalaya? Because we don't belong here.
We don't belong to this material nature or this material energy. We belong to Krishna. So, how much ever we may try, but we can never be happy in this material nature or in this material energy. Unless and until we go back to Krishna, unless and until we are situated on a spiritual platform in relation with Krishna, we cannot be happy. It's impossible to be happy in this material nature because we have no relationship with this material nature. So we are simply wasting our time trying to become happy in this material world. But actually, we can never be happy in this material world. The only way for happiness in this material world is to develop relationship with Krishna because we belong to Krishna. And then because Krishna, it is Krishna who controls this material energy. So he protects us. And then at the end of our life, we go back to Krishna. Only then we can be happy when we are with Krishna. So Krishna has created this material energy or this material nature for that purpose. Those living entities who are against the will of the Lord, those who don't obey Krishna's orders in the spiritual world, they are sent into this material world. They are injected into this material world by Krishna. And the only way out is to again revive our original constitutional position, which is service to Krishna, devotional service. That is called bhakti. That's what Lord Krishna says in the Bhagavad Gita. You see on your screen. You see in the 14th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says in the 26th shloka. You see, what is Krishna saying? Mam cha yogyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaetan brahma bhujaya kalpate. What is Krishna saying? How to go back to Krishna? Brahma bhujaya. How we can again revive our Brahman position, our original position, spiritual position. Brahman position means spiritual position. So Krishna is saying, Mam chayo avyabhicharena bhakti yogena sevate. One who engages in bhakti, sevate, and he serves me. Sagunan samtityetan. He can transcend the three modes. These three modes are the reason why we are stuck into this material nature. These three modes are created by Krishna to bewilder us. Right? When we don't engage in service of Krishna, we will be bound within the three modes. And when we serve Krishna, we transcend the three modes. That's what Krishna says here. You see on your screen. Sagunan samtityetan brahma bhujaya kalpate. Only by service to Krishna. You see, that's what Krishna is saying. Bhakti yogena sevate. When you engage in bhakti yoga and you engage in seva of Krishna, then gunan samtityetan, you transcend the three modes and brahma bhujaya kalpate, and you revive your spiritual position. Only then we can become happy. Now text 27, shloka number 27. Tato bhavan mahattvam avyakta kala choditat विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजम स्तमोनुदः ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजम स्तमोनुदः. Translation. Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter called the Mahat Tattva became manifested. And in this Mahat Tattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of his own body. Now you see. Tato Bhavan Mahat Tattvam Avyaktat Kala Choditat.
So this Mahat Tattva, what is Mahat Tattva? Mahat Tattva is the sum total of all material elements. It's the sum total of all material elements combined together. Now, what are these material elements? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. So these are the 8 elements which are the constituents of this Mahat Tattva. They are all present, okay? But avyaktat kal choditat, but they remain avyakt means they remain unmanifest until and unless till they are kal choditat. Kal chod. Chodan means to inject. Okay. So when time element is injected into this material world, then this Mahat Tattva becomes manifest by the presence of time element. Before time element is injected into this material world remains unmanifest. Can you see? Time element is only present in this material world. Right? Time is a manifestation of the Lord's energy. It is also called as expansion of the Lord's energy. One of the energy of the Lord is time element. In the spiritual world, there is no time element. In the material world, time element differentiates matter from spirit. This Mahat Tattva, this material nature, is differentiated from spiritual world by time. Material world has time, spiritual world has no time. There's no time factor in the spiritual world, right? So this material nature remains inactive till it is injected or till it is influenced by time factor. Vijnanatmatma dehastham, right? So Atma dehastham, from the Lord's own body, Vishwam Vyanyam Stamonudaha. From his own body, all these universe becomes manifested. This is also mentioned in the Brahma Samhita. Yasya Prabha Prabhavato Jagatanda Koti. So there is Brahma Jyoti which is emanated from Krishna's body, and this Brahma Jyoti is the source of spiritual nature. Brahma Jyoti is what spiritual nature is, and this material nature is a product from this Brahma Jyoti only, but it is basically transformation of Brahma Jyoti, which is the cause of this material nature, right? So that is how the Lord creates this material energy. And the form of the Lord who creates all these things is Mahavishnu Karanodakshai Vishnu. So that's what we see here. Maitreya Rishi is telling Mahatma Vidur. So all of you can like the video, you can comment. Those who have not subscribed to our channel, subscribe to our channel. We'll stop here. We'll continue our discussion. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि किस प्रकार महात्मा विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद चल रहा है, और मैत्रेय ऋषि को महात्मा विदुर ने निवेदन किया है कि आप मुझे वो ज्ञान दें जो आपको भगवान कृष्ण से मिला था, भागवत का। और मैत्रेय ऋषि ने वो ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया है। और मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं महात्मा विदुर को, क्योंकि महात्मा विदुर ने ये निवेदन किया था कि मुझे आप भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। तो मैत्रेय ऋषि पुरुष अवतार जो भगवान के हैं, पुरुष अवतार, उनका ज्ञान महात्मा विदुर को दे रहे हैं। पुरुष अवतार किस प्रकार भगवान कृष्ण इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसे किस तरह चलाते हैं। तो ये सारा जो ज्ञान है वो मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को दे रहे हैं। और हमने देखा पिछले सत्र में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी इच्छा से ये जो जड़ जगत है ये प्रकट होता है। सिर्फ वो इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति से ये जड़ जगत जो है ये ये आ, इसका सृजन हो जाता है, ये प्रकट हो जाता है। और जो चतुश्लोकी भागवत है उसका सार भी हमने देखा कि चतुश्लोकी भागवत में जो, क्योंकि वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला था और वही उद्धव जी को बोला और वो मैत्रेय ऋषि ने सुना। तो चतुश्लोकी भागवत का भी सार उन्होंने बताया कि सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो भगवान कृष्ण थे, जब कुछ भी नहीं था तो वो थे, और सब कुछ उनसे ही निकला है और सब कुछ उन्हीं में समाहित होता है। तो समय समय पे सृष्टि का सृजन होता रहता है और समय समय पे वो विनाश, उसका विनाश भगवान करते रहते हैं। तो ये तो जड़ प्रकृति है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति वैकुंठ हमेशा रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक से। 25वां श्लोक। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The Lord is the seer, and the external energy which is seen works both as cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidur, this external energy is known as Maya or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं महात्मा विदुर से
भगवान ही देखने वाले हैं और ये सृष्टि देखी जाने वाली है, और यही सृजन और सृष्टि का अंतर है। और इसलिए हे विदुर, इस जड़ प्रकृति को माया कहते हैं, और इसकी वजह से ये पूरा पूरा जगत चलता है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। कह रहे हैं कि सा व एतस्य समद्रष्टुः। द्रष्टु देखने वाले कौन है? भगवान है। वो देखते हैं, और ये सृष्टि को देखते हैं। वो सृष्टि की ओर वो पश्यत, पश्यत मतलब वो देखते हैं इस सृष्टि को। और ये सृष्टि जो है, ये इसमें सृजन और संचालन दोनों होता है। ठीक है, वो सृष्टि करती है। और इस सृष्टि को क्या कहते हैं? माया। इस सृष्टि को माया शक्ति कहते हैं। अब देखिए वही कह रहे हैं ना, सावा एतस्य समदृष्टु शक्ति ही सद असदात्मिका। तो वो जो शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, वो कौन सी शक्ति है? माया नाम महाभाग। क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि? उसका नाम माया है। ययेदम निर्ममे विभुः। और इसके कारण ये पूरी जगत, पूरी सृष्टि का संचालन वो भगवान की शक्ति करती है। अब जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्तिमान की भी बात होती है, क्योंकि शक्ति का बिना शक्तिमान के कोई अस्तित्व नहीं है कि नहीं? शक्ति का अस्तित्व बिना शक्तिमान के नहीं हो सकता। तो जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्तिमान का भी, क्योंकि शक्तिमान से ही शक्ति निकलती है। बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं हो सकती। तो शक्ति जो है वो शक्तिमान के कारण होती, कोई भी शक्ति। और शक्तिमान हमेशा एक जीव होता है, पुरुष। पुरुष शक्तिमान होता है और प्रकृति शक्ति होती। ठीक है, तो ये जो जड़ जगत है वो भी शक्ति है, ये माया शक्ति है। लेकिन इसमें शक्तिमान कौन है? वो है भगवान। जिस प्रकार हमारे शरीर में, ये जो शरीर है, जैसा हम सब जानते हैं, हमने भगवत गीता में भी इसकी चर्चा कई बार की है, कि हमारे शरीर में जो आत्मा का वास है वो कहाँ पर है? हमारे हृदय में। आत्मा का वास हमारे हृदय में होता है। तो आत्मा भले ही हमारे हृदय में होती, लेकिन सारी शक्ति का स्रोत जो है वो आत्मा ही है। ठीक है, तो और इसीलिए आप देखिए, आत्मा जब तक हृदय में होती है तब तक शरीर में गति होती है, शरीर चलता है, गतिमान होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गए शरीर खत्म हो जाता है ना? उसकी सारी गति सब कुछ खत्म। जैसे कोई गाड़ी है, कोई कार है, तो जब तक उसमें ड्राइवर बैठा है तभी तक वो चल सकती है। ड्राइवर निकल गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो करोड़ों साल तक वैसे ही खड़ी रहेगी जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा, जब तक उसमें चालक नहीं बैठेगा। तो इस सृष्टि का चालक, इस जिस प्रकार इस शरीर का चालक जीवात्मा है, जीवात्मा के कारण शरीर चल रहा है, उसी प्रकार इस सृष्टि के चालक कौन है? शरीर के चालक आत्मा, सृष्टि के चालक परमात्मा। इसीलिए भगवान को परमात्मा कहते हैं। कि हम इस शरीर को जिस तरह चलाते हैं, उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि को चलाते हैं। और
जैसे हम जब इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर चलने लगता है कि नहीं? जैसे एक ड्राइवर, एक चालक जब गाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो गाड़ी चलने लगती है। उसी प्रकार ये सृष्टि, ये जड़ जगत भी तब चलता है जब इसमें भगवान प्रवेश कर जाते हैं विष्णु के रूप में। तो भगवान का वो रूप जिससे वो प्रवेश करते हैं सृष्टि में, जिसके कारण ये सृष्टि चलती है, उसे कहते हैं विष्णु। वो जो रूप है भगवान का, वो जो विस्तार है भगवान का, वो है विष्णु। ठीक है। तो यही चीज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बताते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति की सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवत गीता में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, कि अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रही है। जो कुछ भी सृष्टि में तुम देख रहे हो, चलता हुआ या नहीं चलता हुआ, सब कुछ मेरे कारण है। सब कुछ का स्रोत मैं हूं। ठीक है। तो ये सृष्टि, क्योंकि जड़ जो है वो हमेशा, इसमें गति नहीं आ सकती। कोई भी जड़ वस्तु में गति कब आती है? जब उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है, जब उसमें चेतना का प्रवेश हो जाता है। और चेतना का कारण क्या है? जीवात्मा। तो जीवात्मा के प्रवेश के कारण इस सृष्टि में सब कुछ में गति आती है। और उसी प्रकार इस पूरी सृष्टि में जो गति आती है, वो परम चेतना या परमात्मा यानी भगवान के प्रवेश के कारण आती है। अब हम आते हैं 26वें श्लोक पर। 26वां श्लोक। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्य वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The supreme living being in his feature as the transcendental Purusha incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of the three modes, and thus by the influence of eternal time, the living entities appear. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं महात्मा विदुर से कि परम पुरुषोत्तम भगवान अपने पुरुष अवतार विष्णु के रूप में इस जड़ जगत को गर्भवती बनाते हैं, और समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से इसमें जीव प्रकट हो जाते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। कह रहे हैं कि काल वृत्त्या तो मायाया, काल वृत्त्या, काल वृत्ति यानी काल के कारण, मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः। अधोक्षज का मतलब कृष्णा। कृष्णा का नाम अधोक्षज है। गुणमय्याम, तो ये गुणमयी माया जो है, इसमें काल और गुण का प्रभाव, काल और गुण के प्रभाव से ये जो माया है, ये ये जो शक्ति है चलने लगती है। लेकिन कौन चलाता है इसको? अधोक्षज कृष्णा। और कैसे चलाते हैं? पुरुषेणात्म भूतेना, पुरुष का अवतार लेते हैं वो। तो कौन से अवतार है पुरुष अवतार? महाविष्णु। तो कृष्णा विष्णु का अवतार लेते हैं, पुरुष पुरुष अवतार लेते हैं, वीर्यमाधत्य वीर्यवान। और उनके वीर्य से, उनकी शक्ति से सारे जीव जो हैं इस जगत में
प्रवेश करते हैं या प्रकट होते हैं। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि। आपको मैं एक श्लोक दिखाता हूं भगवत गीता का, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हमें देखना है कि जो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, यहाँ पर जो श्लोक में चर्चा हो रही है मैत्रेय ऋषि के द्वारा जो बताया जा रहा है, बिल्कुल वही चीज आपको भगवत गीता में मिलेगा। भगवत गीता को छोटे में बताया भगवान ने, भागवत में उसको डिटेल में बताया गया है, क्योंकि भागवत जो है वो भगवत गीता का ही विस्तार है। तो इसको छोटे रूप में, इसको छोटा नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं ब्रीफ में, यानी इसको बहुत ही आ, सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर। तो क्या कह रहे हैं, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मम योनिर, हे अर्जुन, मम योनिर, मैं योनि हूं, मैं स्रोत हूं। किसका? महद ब्रह्म। अब महद का मतलब क्या होता है? महद का मतलब होता है महत तत्व। महत तत्व का मतलब, जब ये सारे जो, ये जो महत तत्व का मतलब होता है पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, ये पांच पंचभूत कहलाते हैं। और मन बुद्धि अहंकार, तो ये कुल 8 हैं शक्तियां। तो इन सब का जो मिश्रण है, इन ये सब मिला के महतत्व बनता है। तो इसलिए उसको यहाँ पे महद ब्रह्म कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे इस श्लोक में 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवत गीता के, तो कह रहे हैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये जो महत तत्व है, इसे कहते हैं माया शक्ति भगवान की, ठीक है। तो कह रहे हैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, तो इस माया शक्ति को मैं गर्भवती बना देता हूं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब इस माया शक्ति में मैं जब इसको गर्भवती बनाता हूँ, गर्भवती मतलब इसमें जीवों को डाल देता हूँ, तब क्या होता है, संभव सर्वभूतानां, तब सारे जो जीव हैं वो इस प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं, जब मैं गर्भवती बनाता हूं। इसको हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, माता का जो शरीर होता है, हमारी माँ का, जो स्त्री का शरीर होता है, उसमें सारे जो भी हमारे शरीर को, इस शरीर के लिए जो कुछ भी चाहिए, शरीर का इस शरीर का सृजन करने के लिए, इसे चलाने के लिए, इसे बड़ा करने के लिए, वो सब कुछ माता के गर्भ में उपस्थित होता है। सारे सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ जिसके कारण हमारा शरीर आ, बनता है, वो सब कुछ माता के गर्भ में, वो सब कुछ होता है कि नहीं? सब कुछ उपस्थित होता है। लेकिन क्या माता का शरीर खुद से ही आ, जीव को बना सकता है? नहीं। जब तक पिता माता के शरीर में हमको डालते नहीं हैं, तब तक माता का शरीर में भले ही सारे पदार्थ हैं, लेकिन वो अपने आप बच्चा नहीं बना सकता। जब तक पिता जीवात्मा को, तो जीवात्मा पिता के वीर्य में, का जो उनका वीर्य है, उसमें जीवात्मा होती है, उसमें तैरती रहती है। और जब पिता अपने वीर्य को माता के अंदर डालते हैं,
उससे हम प्रवेश कर जाते हैं, तब माता का जो शरीर है उसमें पदार्थ सारे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को बनाते तब शुरू करते हैं जब हम प्रवेश कर जाते हैं माता के शरीर में। तो हमको डालता कौन है माता के शरीर में? हमारे पिता। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारे माता के शरीर में सारे पदार्थ होते हैं जिससे हमारा शरीर बन सके, उसी प्रकार ये जो जड़ जगत है इसमें वो सारी वस्तुएं हैं, सारे पदार्थ हैं। जैसे हमने बताया, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये और मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ है इस जड़ जगत में हमारे शरीर को बनाने के लिए। लेकिन शरीर, जिस प्रकार हमारे माँ के शरीर में भी सब कुछ होता है, इस जड़ जगत में भी सब कुछ है माया शक्ति में, लेकिन वो अपने आप हमारा शरीर नहीं बना सकती जब तक। तो ये जो जड़ जगत है, इसको हम माँ के गर्भ से तुलना कर सकते हैं। तो इस जड़ जगत में भी जब तक हम लोगों को डाला नहीं जाता भगवान के द्वारा, हमारा शरीर नहीं बन सकता। ये जड़ जगत अपने आप जीवों को नहीं बना सकती। जब पिता, जब भगवान इसमें हम लोगों को इंजेक्ट कर देते हैं, जब हमको डाल देते हैं, तब फिर जो जड़ जगत है वो हमें शरीर बना के देती है, 84 लाख योनियां। ठीक है। तो शरीर इस जड़ जगत के द्वारा दिया जाता है, इस माया शक्ति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम हैं किसके? हम किसके द्वारा इस जड़ जगत में डाले जाते हैं? वो हैं कृष्णा। तो कृष्णा कैसे इस जड़ जगत को गर्भवती बनाते, कैसे हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं? शास्त्रों में बताया गया है, कुछ नहीं करना होता है, भगवान ऐसे बस इस सृष्टि की ओर देखते हैं और सृष्टि गर्भवती हो जाती है, अनंत जीव इस सृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो भगवान के लिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। तो अंगान यस्य सकलेन्द्रिय, तो कृष्णा का हर अंग, हर इंद्रिया भगवान के शरीर की बाकी सारी इंद्रियों का काम कर सकती है। कृष्णा आंख से खा सकते हैं। ठीक है। तो हर इंद्रिय से वो हर काम कर सकते हैं, वो हमारी तरफ बंधे हुए नहीं। तो हम इस जड़ जगत के नहीं हैं। इस जड़ जगत के द्वारा, इस माया शक्ति के द्वारा हमको शरीर प्रदान किया जाता है, लेकिन हम इस जड़ जगत के नहीं हैं। हम तो भगवान के हैं, हम उनके अंश हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ शरीर दिया जाता है, और वो शरीर इसलिए हम बदलते रहते हैं। तो हमारा इस जड़ जगत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध ही नहीं। ठीक है। और इसीलिए हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते इस जड़ जगत में, क्योंकि हम इस जड़ जगत से हैं ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है इसके साथ। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया है? जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान हमको इस जड़ जगत में डाल देते हैं। लेकिन हम तो इस जड़ जगत के हैं नहीं, हम तो भगवान के अंश हैं। ठीक है। और इसीलिए हम कभी यहाँ पर प्रसन्न नहीं रह सकते, कभी आनंद में नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 9वें अध्याय में बताते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गता। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, ये दुखालय है, ये जड़ जगत। क्यों? क्योंकि हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं है, हम यहाँ पे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते, जब तक हम भगवान से अपना संबंध वापस स्थापित नहीं कर सकते। इस जड़ जगत में हम क्यों आते हैं? जब भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो अब इस जड़ जगत से वापस कैसे जाएंगे? वो भगवान, आप देखिए, आपको एक और श्लोक दिखाता हूं। एक और श्लोक
भगवत गीता का दिखाता हूं आप। कृष्णा क्या कह रहे हैं आप देखिए अपने स्क्रीन पर, 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। क्या कह रहे हैं कि सारी जो योनियां हैं इनको शरीर कौन प्रदान करता है? ये सब जड़ जगत के द्वारा दिया जाता है। तासाम ब्रह्म महद, तो ये जो महद ब्रह्म है, ये जो जड़ जगत है, वो शरीर देती है। ठीक है। लेकिन अहम बीज प्रदः पिता, लेकिन बीज देने वाला पिता मैं हूं। जड़ प्रकृति सिर्फ हमको शरीर देती है, लेकिन हम किसके हैं? भगवान के, वो हमारे पिता हैं। ठीक है। तो अब पिता तो हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। वही भगवान आप देखिए 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता रहे हैं भगवत गीता में। क्या कह रहे हैं? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब क्या कह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जब कोई मेरी भक्ति में मेरी सेवा करता है तो सगुणान संतीत्यतान, वो इन गुणों को पार कर जाता है, और तब वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो अपने वास्तविक स्थिति को पा लेता है, ब्रह्म स्थिति को अपने पा लेता है। तो हमारा इस जड़ जगत से कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए हम कभी यहाँ पर सुखी नहीं रह सकते। ठीक है। तो जब तक हम वापस से भगवान की भक्ति नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़कर हम यहाँ आए और हमारा यहाँ से कोई संबंध नहीं, इसलिए हम सुखी नहीं रहते, यहाँ पे कभी नहीं सुखी रह सकते। तो वापस से अपनी स्थिति को पाने का एकमात्र जो मार्ग है वो क्या है? भक्ति। वापस से भगवान से जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो हम इस जड़ जगत से वापस चले जाएंगे, शरीर के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम आते हैं 27वें श्लोक में। 27वां श्लोक। ततो भवन महत्तत्वम् अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थम् विश्वं व्यंजं स्तमोनुदः। ततो भवन महत्तत्वम् अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थम् विश्वं व्यंजं स्तमोनुदः। Translation: thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter called the Mahat Tattva became manifested. And in this Mahat Tattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of his own body. अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि उसके बाद काल के प्रभाव से ये जो महत तत्व है ये प्रकट होता है, और इस महत तत्व में भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के अपने शरीर के प्रभाव से इसमें बीज देते हैं। अब आप देखिए, ततो भवन महत तत्वम, तो ये महत तत्व, ये जो जैसा हमने चर्चा किया अभी, महत तत्व मतलब ये जड़ प्रकृति जिसमें सारे पदार्थ उपस्थित हैं। ठीक है। तो ये जो जड़ प्रकृति है इसमें सारे पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो पदार्थ हैं, इससे ये जड़ प्रकृति बनी है, ये महत तत्व बना है। तो ये सब रहते हैं, लेकिन ये अव्यक्त रहते हैं, मतलब इनमें गति नहीं रहती, इनमें ये किसी काम के नहीं रहते। कब तक? काल चोदितात, जब ये काल प्रवेश करता है, यानी काल के कारण इनमें गति आती है, ये सब व्यक्त हो जाते हैं। काल चोदित, काल मतलब समय, चोदित चोदन, चोदन मतलब जब काल इसमें
प्रवेश करता तो ये जो महत्त्व है 3 गुणों का बना हुआ है कि नहीं, जो हमने अभी चर्चा किया पिछले श्लोक में। ये 3 गुण हैं और समय। तो ये 3 गुण जो हैं, इनका ये बना हुआ है। और इन 3 गुणों को ऐसे हिलाते हैं, ये जो जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो इन 3 गुणों को जो प्रभावित करते हैं, या 3 गुणों को जो आ, गति देता है, वो समय देता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो महत्त्व है, ये अव्यक्त होता है, इसमें कुछ ये उपस्थित नहीं होता जब तक काल का प्रवेश नहीं होता है। काल के कारण ये जो महत्त्व है, ये जड़ जगत प्रकट हो जाता है। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, काल चोदितात का मतलब क्या हुआ, यानी कि आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ में काल नहीं है। ठीक है। काल भगवान की एक शक्ति है। तो ये शक्ति कहाँ रहती है? जड़ जगत में काल है। आध्यात्मिक जगत में काल नाम की कोई चीज है ही नहीं, समय है ही नहीं। तो समय इस जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो अंतर है, जो इन दोनों को अलग करता है, वो है समय, काल। ठीक है। तो विज्ञान आत्मदेहस्थम, तो भगवान के शरीर की प्रभा से, यानी उनकी ब्रह्म ज्योति से, विश्वम व्यंजम स्तमोनुदः, उनकी ब्रह्म ज्योति से ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है। जैसा हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा है कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, तो भगवान के शरीर से जो प्रभा, जो ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उस ब्रह्म ज्योति के प्रभाव से ये जड़ जगत उसी के विकार से पैदा होता है। तो सब कुछ भगवान के कारण ही होता है। ये सब शक्तियां हैं, लेकिन भगवान शक्तिमान है, और उनके कारण ये सब कुछ प्रकट होता है। तो वो यहाँ हम देख रहे हैं। आप लोग, सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।